So in this video, we will be seeing that how to take a trade. So I randomly sometimes I tend to forget and आदत से निकल जाता है, बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है, और फिर रैंडमली ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीका है, एक टेम्पलेट है मार्केट को समझने का, जैसे मैं जनरली समझता हूँ जब मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा होता हूँ। तो जब मेरे को मार्केट अच्छे से समझ में आ रहा होता है, जैसे कि अभी मैं बैक टेस्ट कर रहा था तो अचानक से मैंने एक डेट चूज़ करी और ट्रेड करना चालू कर दिया। लेकिन मैं अचानक से बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि मैं कैसे क्या ट्रेड करूं, यहाँ पे ये मार्केट धड़ाधड़ गिरने लग गई, अरे मैं क्या करूं क्या। तो ये एक टेम्पलेट है। इस विचारधारा के साथ आप आए मार्केट में तो आपको उतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, स्पेसिफिकली मुझे करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। सो स्टेप वन हमेशा हमारा ये रहेगा कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ये देखें कि आखिर प्राइस करना क्या चाह रहा है, व्हाट इज़ प्राइस डूइंग ऑन डेली चार्ट। So this needs to happen before even the market opens, where the price is on daily chart and what is the price action. What I mean by what is the price action is what price is trying to do. प्राइस करने की कोशिश क्या कर रहा है, जो प्राइस एक्शन वो बना रहा है यहाँ पे। और मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरे क्वेश्चंस आप ये भी पूछ सकते हैं कि इज़ इट द बायर्स हु आर एक्टिव और सेलर्स और बोथ आर एक्टिव और बोथ आर कंफ्यूज। बोथ आर एक्टिव होएगा आपका सेलिंग वो साइडवेज एनवायरनमेंट में, और बोथ कंफ्यूज्ड होंगे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन यहाँ पे ओवरटेक करे। वो कंफ्यूजन जोन्स होते हैं जहाँ पे जनरली हमारे एसएल भी बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, और एसएल अ पार्ट ऑफ गेम, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा कि कैसे एसएल हिट हो सकते थे और उनसे बचा भी जा सकता था, जो मेरे हिट हुए और नहीं भी हुए। तो अभी हम देखेंगे कि स्टेप वन में हम डेली चार्ट पे गए और अब देखें कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो मैंने 22 से बैक टेस्ट करना चालू करा था। तो मैं देखूंगा कि जब मैंने ये चार्ट देखा तो उस टाइम मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरा बिल्कुल दिमाग बौखला गया कि अरे भाई कैसे ट्रेड करूँ मैं इसे। तो बिल्कुल जब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल नेकेड चार्ट देखेंगे, बिल्कुल सब कुछ हटा दे, सिर्फ प्राइस एक्शन, सिर्फ बार्स इस पे अगर देखेंगे, ये सब कुछ एक सेकंड के लिए भूल जाए, क्योंकि अगर मैं इनको हाइड करूँगा तो फिर शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो हाँ, अभी इस इमेजिन करिए ये सब कुछ बना नहीं हुआ है। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस धड़ाधड़ धड़ाधड़ भागते हुए ऊपर आ रहा है, और काफ़ी दिनों से भागते हुए ऊपर आ रहा है। काफ़ी बड़ी रैली है ये, और इसने अपना प्रीवियस स्विंग तोड़ दिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा था, और ये भागते 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 लगातार भागते भागते आ रहा है, और यहाँ पे अब फाइनली जाके एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, और ऐसी जगह बनी है जहाँ पे इसका एक प्रीवियस स्विंग हाई था। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इस कैंडल का फॉलो अप मिलता है, फॉलो अप कैसे होएगा, इस कैंडल के नीचे अगर ट्रेडिंग चालू हो जाती है प्राइस की अगले दिन, तो हम बेरिश कैंडल पे ट्रेड, मतलब मार्केट बेरिश हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो और शॉर्ट टर्म कहाँ तक के लिए हो जाएगा, वो मार्केट अपने ये हो जाएगा इसका सप्लाई एरिया, और वो जाएगा अपने डिमांड एरिया में। तो डिमांड एरिया कहाँ पर था प्रीवियस, तो स्मॉल स्मॉल डिमांड जोन्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे गैप है, गैप फिल करने के लिए आ सकता है, उसके पहले ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे रेजिस्टेंस तो सपोर्ट तो हमें मिलते रहेंगे, लेकिन मेजर सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा 37,693, जो कि इस 37,693 से लेके 38,123। तो ये 400-500 की रेंज इसके लिए एक सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है, और ये हो जाएगा हमारे लिए कंफ्यूजन रेंज। जब प्राइस इसकी यहाँ पे आके ट्रेड करने लगेगा तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम सेल करें या बाय करें। बट उसके लिए भी हमारे लिए एक वो है सोल्यूशन है कि आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दीजिए और
इंट्राडे में जैसा चार्ट कह रहा है आप वैसा करिए। तो ये हो गया। फिर दूसरा, हम ये एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि तो प्राइस नीचे आके ट्रेड करेगा और ये सपोर्ट एरिया के पास आ सकता है। अब हम लोग जाएंगे अपने आवरली और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने। तो जैसे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो ये यहाँ से सब एक सप्लाई डिमांड जोन था। तो डिमांड जोन यहाँ पे आया और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी थी, तो मार्केट सीधा गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। और ये ब्लू लाइन अगर आप देखें तो ये प्रीवियस स्विंग था जो पहले क्रॉस करके गया था। अ, और ये जहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट भी दिखाया था प्राइस ने लेटर ऑन। तो यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि गैप फिल होना चाहिए, और कैसे जाएगा वो हम नहीं बता सकते। ओपनिंग में मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता कि गैप डाउन खुले, यहाँ पे जाए और यहाँ पे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेके, इस एरिया में रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आए, और वहाँ पे शॉर्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि हमें एक डेफिनेटिव एसएल पता चलता है। अब 5 मिनट 15 मिनट पे जाते हैं, तो हमें 15 मिनट पे 5 मिनट पे अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो फर्स्ट कैंडल तो हमारे लिए वो बन रही है, एक हैमर कैंडल बन रही है, ऑल्दो नॉट प्योर हैमर, बट एक हैमर कैंडल बन रही है। बट क्या हम इस हैमर पे ट्रेड लेंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट तो नेगेटिव है ऑन डेली टाइम फ्रेम फॉर शॉर्ट टर्म। तो और ये हायर हाई हायर लोस, लोअर हाइज लोअर लो पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई। और तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, वील स्टिल वेट। या फिर ट्रेड लेना भी है तो हम लोग नेगेटिव साइड का ट्रेड लेंगे। हम लोग सीधा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ही ये पूरी एनगल्फ कर लेता है इसको और ये वाली कैंडल का क्लोज होता है 921 वाली कैंडल का, हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और कहाँ के लिए इनिशिएट करेंगे? हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगले स्मॉलर सप्लाई जोन के लिए, डिमांड जोन के लिए। और हमारा एक डेफिनेटिव एसएल लगा के रखेंगे। हमारा डेफिनेटिव एसएल हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, हमारा एसएल हो जाएगा कि हम ये इसके ऊपर ना जाएं। और टारगेट 1:1:2, अराउंड 1:2 1:5, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड में उतने अच्छे वो नहीं मिलते हैं जनरली। तो एक सेकेंड, मैं स्टेप वाइज चलता हूँ एक्चुअली। तो पहला स्टेप ये हो गया कि ये मैं काफ़ी आगे आ गया एक्चुअली। तो हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पे अपना एक नज़रिया बना लिया। डेली टाइम फ्रेम पे एक नज़रिया बना लिया कि प्राइस क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। और हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ये भी देखेंगे कि अच्छा, अगर ये यहाँ पे ना खुल के इसको कंटिन्यू ना करके एक इनसाइड डे बना देता है या फिर इसके रेंज के अंदर खुलता है, तब क्या करा जाएगा? या फिर अगर गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे? तो एक बुलिश किकर पैटर्न बन जाएगा अगर गैप अप खुल गया। अगर इस रेंज के अंदर खुल रहा है तब क्या करेंगे, वो उस टाइम डिसाइड करा जाएगा। उस टाइम हम लोग ये देखते हैं कि भाई प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है इसके अंदर। अगर यहाँ पे खुल जाता है तो स्टिल ट्राई टू सेल ओनली, बिकॉज इतना ज़्यादा मोमेंटम था, बेयरिश मोमेंटम था। सो एनी हम लोग ये फिबोनाची लगा के यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते कि जैसे यहाँ से रिट्रेसमेंट 50-60% तक पहुँचा और वहाँ पे कोई अपना सेटअप बनता है, तो हम लोग सेल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन ये जब एक बार कंटिन्यू हो गया यहाँ पे ये सब, ये सॉरी, ये हो गया हमारा स्टेप 1 कि हम लोग को एक नज़रिया बनाना है कि डेली चार्ट पे प्राइस कर क्या रहा है। सो यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जब यहाँ इस एरिया को भी ये फेल कर देगा डेली चार्ट पे, अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा, तब वी कैन कॉन्फिडेंटली गो शॉर्ट कि भाई मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। द मार्केट एनवायरनमेंट ऑन डेली टाइम फ्रेम हैज़ नाउ बिकम बेयरिश एंड वी विल एक्टिवली लुक फॉर शॉर्ट्स। फिर once we have identified on the chart what the price is trying to do, what next we'll do is we'll mark the charts, we'll decorate our chart where are the local resistance and support areas where the price can
move, and what are the major demand and supply zones where the price is running to move. And उसके बाद फिर good understanding of what price did and where it went on past 2 3 days, very thorough understanding. So ये this is very important for us, that for past 2 3 days what is price doing. And why that is important? That is important because it gives a structure, it makes a storyline. So uh, in this scenario it doesn't matter much, but imagine scenarios like this over here on 12th, or just imagine scenarios like on 17th. This is more prevalent during sideways market, very prevalent, very strongly prevalent during sideways market. Like for example over here in third, we know that this is the supply zone around this place, and so the price is coming over here. First price went shorter from here, again gap down opening, again shorter from here, so this became our supply zone. So once the price came down over here, we can expect the price to shoot back again to this demand zone over here, and exactly what it did. And now again came back, and what we see here is again a supply zone, and the price again went back. So when it's going back over here, we can again take a trade long, and when it's coming back over here, we can again take a trade short till around over here. So this is why it's very important to keep in mind what the price is doing last 2 3 days. So here we know that the price the price movements was so huge that it just covered everything. Last 6 days it covered in just one day. So we know that the bearish momentum is quite strong, and this bearish momentum might not necessarily be because of the profit booking, uh, because of the selling. It's most probably because of the profit bookings, because you see the price is moving if- in one direction since such a long time. So this can be a healthy correction. Excuse me. And then once we have decided about everything, that how we'll gonna deal with price when the price is trading over here, or gap up or gap down, or inside some range, opening flat, then we'll wait for the market open. And once we get the opening price, then we'll again revisit now what can we do. Okay, so does the opening is within our understanding of what we had with the plans which we had? If it is, then okay, let's go with it. If it opens a bit too big gap up or gap down, then again we'll have to reconsider everything. We have around 5 to 10 minutes before the market opens. Every day we get the close opening price around 9998 every day, so we still have around 5 6 minutes, and 5 6 minutes I think are more than enough to think about how the price will. So then first 5 minute candle is very very important. So over here the first 5 minute candle was so confusing because it made a hammer candle, which is kind of bullish. Now the price is, we are expecting the price to move lower into the support zone, which happens to be around below this green area. I'll show you again. Below this green area, this is the support zone we are talking about. And the so this is the support zone we are talking about. We are expecting the price to move inside it, but what it did was, first candle very important, and it made this thing, a hammer candle. Then uh, the what we'll do is we'll again wait, and for waiting, what it did was it went down. So now what we can do is we'll again wait because there is no setup. So we at around this setup at around 9:30 we can choose to go short, because this is an inside candle setup, and the price has closed absolutely, it's a bearish Marabuzu candle. So now we can expect the price to fall again. So we take a trade over here and keep SL around somewhere around above 500.
because this is around 510. So we'll keep the SL around 530, 535, and then we'll go short. And once we go short, we'll we'll look for where can we keep our where should we keep our targets. So targets, this is a small zone where the price was first taking resistance and then taking support. So this can be a first target, and this also happens to be closing of that day. So this could be around 290, 38, 290 could be a first. So this will be a first trade. Now second trade we'll wait because the price is moving upwards and we are not planning to go long until unless there's the change of pattern is there. So the pattern over here is lower high, lower high, lower high, and lower low, lower low, lower low. And to break the previous swing, this is the major previous swing and it has to break, otherwise we won't. So what it did at previous swing high, it made a candle which we all know is a shooting star candle. So now let's see what it did on 15 minute. On 15 minute also it made a shooting star candle. And what we are expecting the price to do, we are expecting the price to go around in this area. So and is the price making a setup for us? Yes, the price is making a setup for us. So we'll take a trade over here as soon as the entry is provided to us. We'll take a trade and the price started going down, and we'll book our targets wherever we deem fit around this support area, or maybe even ride it for further gains. But over here, then since the price is again coming back, we can book or something like that. But that's advanced concepts. The what we'll do during trading, that's what we have to learn. But how to get started, this is the procedure. uh, so around that's what I wait for the open. Once we have the opening price after our first step, then we'll match the then we'll again plan that and reinforce our original plan if it's fitting in our plan. Then step 3 is for wait for the opening candle and see how the morning trade, how is the trade given to us in the morning. The first candle, first 5 minutes is very important. So until unless if it is advanced concepts where you take trade before even first 5 minutes, but uh, first 5 minutes very important. Stay back and see what the first 5 minute candle is like. So and then accordingly initiate the trade or wait. And then so in this case we had to wait further because it was not sitting with our analysis. And yeah, so this is also kind of a big J setup. So if it would have gone over here again, and then it would have given a big huge move towards the upside. But it didn't form over here, it just collapsed. And next day what happened? Next day what we are expecting is the price is still negative. We'll do the same thing on Nifty as well and trade the one which is more negative. So the this thing, Bank Nifty, sorry. Yeah, next day we'll repeat the same thing. Step 1, see on daily time frame what the price is trying to do. So price gave a continuation. So now we know that the price should come around in this area, uh, and then reverse from here, because we are still treating this as a retracement, as a pullback, right? And this will be our major support around there, 37 600, 650. Around this place will be a major support. And what can the price do? We'll decide that. Okay, let's go on 15-minute time frame and see if the price opens in this area and it breaks, then we'll go short. Okay, if the price opens some gap up, then we can go short over here after some candle is formed, like shooting star candle is formed. Or if the price opens around this area, we can use Fibonacci tools like that, or wait for the first 5 minutes, because we don't really have, and makes first 5 minute candle bullish, so we'll again wait. If it makes bearish and comes down, then we can plan the price to come down till this level. There's a trend line over here, I can see, if I am not drawing that. Okay, so
things like that. If the price is opening gap down, then what we are gonna do? Then if the price is opening gap down into that support zone, then we'll just wait and watch what's the price. So uh in this time, so what it did was it opened gap down, and what we are expecting the price to do in the gap down, we are expecting it to get back, take reversal from over here, and our last support is around 37 600 650. This is our last support area, this zone. Okay, so what the price did in the support zone, just blasted back up. Okay, so how will we take the trade in this area? I don't know. We That's another issue. So first 5 minute we wait, first 5 minute bullish candle. As soon as we get a chance to enter over here anywhere, then we can go and enter the can make a trade, and we can enter again on retracement, because we know the price has achieved its objective on the daily time frame. Now it's gonna go back again towards the supply zone. So on daily time frame versus supply zone, it's around here. So now I'm trading with the intention of going long until it's something otherwise. So it also broke the structure which was happening, lower high, lower high, lower high. It made a higher high. Now it came back over here. This happens to be a very strong support zone which we have already marked. So it took support over here. So still we can't get a good entry. So it went up. It came back over here again. It again went up. Now we know it's a pattern. It's forming higher high, higher low. Sorry, over here. We can take entry as soon as this candle closes. 12:30 candle. Keep RSL below this, and we can plan to go long. And look, went long. Where will we keep our target? First target maybe around over here, maybe around over here, maybe around over here. There's this. I'll show you one trend line which what was following. There was some trend line which it was following, which I have deleted now. There was some trend line which was coming somewhere like this. So yeah, and see all these things. So 2 trades every day makes a man very happy. One trade in the morning itself, if I'm able to catch, not trading towards the downside, not trading towards the one trade, maybe one SL hit over here, because 50% retracement, doji candle, sorry, not doji, hammer candle, but this hammer candle was not activated. Let's see, 50% retracement, hammer candle, uh, support zone. This was support. Previous day price was taking support in this area. One could have gone long. I might have gone long over here, and my SL would have definitely been at. So what to do? Take one SL, wait for another trade, take another trade over here, go long over here. So this is the template of how to trade during markets.